तो इस क्वेश्चन में हमें टेंशन कैलकुलेट करना था और एक्सीलरेशन। अगर इन तीन ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम को मैं अलग अलग बनाऊं, जैसे कि ये टेंशन T1 है फॉर 10 kg ब्लॉक और इसका मास 10 g डाउनवर्ड और a एक्सीलरेशन अपवर्ड। 15 kg ब्लॉक के अगर यदि हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो tension T1 will be upward and T2 will be downward, and one more thing, the 15 g weight of this block will be acting downward with acceleration a, that is also in the downward direction. For 5 kilogram block, the FBD will be T2 and the 5g will be downward and acceleration a will also be downward. So writing the equation of all these three blocks, it will be T1 minus 10g equals to 10a according to the force, जिस डायरेक्शन के फोर्स ग्रेटर होंगे उस डायरेक्शन के एक्सीलरेशन के हिसाब से the equations will be written here. 15a and the third equation is 5g minus T2 equals to 5a. इन इक्वेशंस को ऐड करिए, ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? यू विल गेट 30 times a equals to T1 T1 कैंसिल, T2 T2 कैंसिल और ये हो जाएगा 20g minus 10g, that is 100. Acceleration you will be getting 10 by 3 meter per second square. So Ekta had solved this question and sent me yesterday only, and her answer was absolutely correct. So after getting this acceleration, can you calculate these tension? Yes, we can. So T1 and T2 should be calculated from the equations which we have found here with the help of free body diagram. Now the another question which we were discussing yesterday, at the end we have to calculate the tension in the string and normal contact force between ball and wall, like the normal here and the tension here. So if we make the diagram and we see the component of forces, one which is balancing the mg, another which is balancing the normal. So T cos theta here is balancing the weight of this ball, and T sin theta is balancing the normal contact force acting on the ball because of this wall. So if we divide these two, or if you want, the theta is given 37 degree, so you can calculate the tension from here. The T cos 37 degree equals to 20, because 20 is 2g. Cos 37 is nothing but the 4 by 5 equals to 20. So the tension you will get is 25 Newton. And in case of normal, the T sin theta will be equals to normal. So normal will be tension we have calculated 25, and sine 37 degree is nothing but the 3 by 5. So 25 into 3 by 5, and the normal reaction force will be equal to 15 Newton. So these were the questions that I have given you in the homework. Now find the tension and acceleration of the setup shown here. Tension and acceleration we have to calculate, and the system shown is an inclined plane. Inclined plane here, and a block over this plane,
2 kg mass and connected with a thread and with the help of a smooth pulley which is connected to a 5 kg block. So we have to find the tension in the string and acceleration of this system if the theta is given 37 degree. So if you can calculate this, then I will definitely wait for your answer. Solve this question. देखिए फ्री बॉडी डायग्राम में बनाता हूँ 2 kg वाले ब्लॉक। मैंने कहा था आपको जितने फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बनाए हैं वो मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन कब? जब आप उनको बार बार रिवाइज करोगे तब, ताकि क्वेश्चन दिखा और आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में कोई भी टाइम ना लगे। टेंशन टी इस तरफ और इस ब्लॉक का एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा बोले तो 2g साइन 37 डिग्री। ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है? बोलिए, नहीं आ रहा हो तो प्लीज बता दें। It will be equals to, very good नेहा बलवान। देखते हैं बेटा आपका आंसर सही है कि नहीं। So it is 12 meters. Okay, Neha has got the answer. Both Neha. Now for 5 kilogram block, the same tension will be here because the string will not change and it's mg 5g. So the motion 5g is equivalent to what? 50 newton. If we see, then this mass is heavy, so it will move downward, and for that the 2 kilogram block will have to move up the incline. It means the acceleration can be shown in this way. So according to the acceleration, the net force equals to mass into acceleration. Using the second law of motion, we can write the equation 50 minus t equals to 5 times a. P and t will get cancelled. 50 minus 12 is 38 equals to 7a. So the acceleration we will get 38 by 7. If you calculate this, 5.43 meter per second square. Is this correct? Anybody with the problem? Neha, can you understand this? Anybody having doubt, please? The mass T minus mg sin theta. Sin theta is 3 by 5. So here it is 12 Newton. So T minus 12, we are getting 2 into A, and 50 minus T equals to 5A. If we add these two, T will get cancelled. 50 minus 12 will be 38 equals to 7A. So it is 5.43 meter per second square. So if we get the acceleration, then you can put the acceleration in any of this following equation. 38 by 7 we will put here. T minus 12 equals to 2a. This is the equation number 1. So for acceleration, if it is 38 by 7, so this one will become 76 by 7. So tension T can be written as 76 by 7 plus 12. 84 plus 76 is 0, 16, 160 by 7. So the tension will be 2.85 न्यूटन। ये कैलकुलेशन है, आप एक बार अपने अपने आंसर चेक कर लेना। दिस विल बी द आंसर, शुड बी द आंसर। ओके, तो ऐसे ऐसे सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं
तो आपको अकॉर्डिंगली पता होना चाहिए। देखो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को सीधा सीधा फंडा ये है कि आप तभी समझ सकते हैं जबकि आपको आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए। क्वेश्चन मैंने बहुत ज्यादा कर दिए हैं, आप इनको ब्रीफली एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ना जरूर। यहाँ पर एक टूल के हेल्प से मैंने एक ब्लॉक कनेक्ट किया है। थोड़ा सा ये और नीचे ले चलकर इसको एक टेबल के कॉर्नर पर दो पुली लगाएंगे हम। एक तरफ हमने मान लेते हैं कि 10 केजी का ब्लॉक लगा दिया है और दूसरी तरफ ये पुली के हेल्प से 15 केजी का ब्लॉक कनेक्ट कर दिया है। ओके, 15 केजी। तो इस वाले सेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग का अगर टेंशन में T1 मान लूं, यहाँ का टेंशन T2 मान लूं और सिस्टम का एक्सीलरेशन, देखो जिस तरफ ज्यादा फोर्स एक्ट करेगा, जैसे 15 केजी हमने कनेक्ट किया है, इधर को फोर्स पुल करने वाला ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो ये ऊपर मूव करेंगे 10 केजी, 15 केजी will move downward. So you have to calculate T1, T2 and acceleration. I'm waiting for your answer. Please solve this question. So we have homework. These questions, this question is in homework. Two blocks are there. We have to find the tensor and acceleration. And the next question as a homework. Suppose you have a particle or block of mass 2 kilogram at p equals to 0. It starts with 30 meter per second speed under a retardation under a retardation of 5 meter per second square. So you have to distance find the distance covered by the particle in first में ऐसा लिखते t equals to 0 to 5 second, and in second part from t equals to 0 to 9 second. So these are the questions that you need to solve. Then you will send me the answer and solved solution of your calculation, and I will check your questions. Now, as we have discussed the second law, according to second law of motion, let's come to see the basic theory concept. According to second law, we have discussed that the force is written as rate of change of linear momentum. It means the change in momentum upon time. So somewhere we can also write the change in momentum can be equal to force multiplied with time. So accordingly, sometime we may have to integrate this equation and sometime we may have to differentiate this given equation. But it may happen that the ball takes that the particle takes some time to change its momentum. So accordingly, the average force can also be written as the change in momentum means final momentum minus initial momentum upon time taken, 2 minus t. So the calculations will depend according to the information given in the question, right? Suppose we have given a 150 gram ball, 150 gram ball traveling at 30 meter per second, traveling at 30 meter per second, strikes the
strikes the palm of a player's hand, palm of a player's hand, and it stopped in and it stopped in 0.06 second. Calculate the force exerted by the ball. Calculate the force exerted by the ball on the head. On the head. क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो इसको सॉल्व करिए और अभी के अभी इसके लिए आंसर निकालिए। यहाँ से अगर हम देखें तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, अगर मैं बॉल के चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम तो यहाँ पर पुट करता हूँ, इसका मतलब क्या है कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो जितना फोर्स बॉल एक्सर्ट करेगा ऑन द हैंड, उतना ही फोर्स हैंड विल एक्सर्ट ऑन द बॉल because of Newton's third law of motion. Action and reaction are opposite and equally magnitude. So this calculation, final momentum minus initial momentum of the ball, these are of the ball, will lead to the calculation of force exerted on the ball. So here we can write 4.5 upon 6, and this will be multiplied with 100. So you can calculate this 450 upon 6 minus 75 Newton is the force exerted on the ball. Hence, force exerted on the hand, it will be on the hand will be equals to plus 75 Newton. होप कि आपको ये समझ में आया हो। एक और अच्छा सा क्वेश्चन है हमारे पास। There is a graph given for a ball having mass 20 gram and the velocity of the ball changes from 20 meter per second from 20 meter per second. This is the 20 given, and this is the speed axis, and here it has time axis, and it takes 10 seconds to get the ball into the rest. Okay, so we have to calculate the force and ball moving along a straight line on a long table. Ball moving along a straight line on a long table. तो अपने को बताने का how much force does the table, how much force does the table exert on the ball, exert on the ball to bring it to the rest.
to bring it to the rest। तो आपको पता है यहाँ पर सीधा सीधा क्या करना है, फोर्स को फाइनल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। मोमेंटम में चेंज इस तरीके से, मास इनटू चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम। टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकेंड। मास क्या दिया है, 20 ग्राम, 10 टू द पावर माइनस 3। और जो ये स्पीड है, ये स्पीड आपको गिवन है सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, इसे सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड को हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं। चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो रही है, 20 से 0। क्या लिखूंगा इसको, 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ से यहाँ पर आंसर अपने पास आ जाएगा। और ये चेंजिंग मोमेंटम ऑब्वियसली इनिशियल मोमेंटम 0, सॉरी फाइनल मोमेंटम 0, इनिशियल मोमेंटम समथिंग। So the force exerted required to be exerted will be minus 4 times 10 to the power minus 4। ये देखो फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो बॉल का चेंज इन मोमेंटम यहाँ पर क्या था, ऑन द हैंड। तो बॉल पे रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम को हमने नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर, तो ये एक्शन और रिएक्शन पेयर होने की वजह से ऐसा होता है। सारिका, आर यू देयर इन द लेक्चर? शो योर प्रेजेंस। सो नाउ मोशन के लिए आज के लिए इतना ही। ओके, सो सारिका हैज आस्क्ड few doubts. I could not discuss it yet, but I will discuss it today. Let me find your मैंने जो सवाल पूछे हैं उनमें से तो कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए भी हैं। उन्होंने करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन पूछे हैं। क्वेश्चन का फोटो सारा मेरे को क्लियर दिखा नहीं होगा, फिर भी मैं हिंट करता हूँ सारी का। ओके, आप ट्राई करना फिर से। एक अमीटर कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और एक वोल्ट मीटर कनेक्टेड है। ये क्वेश्चन आपका डाउट था। और ये वोल्ट, ये जो रेजिस्टेंस है आर है, वोल्ट मीटर की रीडिंग 20 वोल्ट है और अमीटर की रीडिंग मेरे को यहाँ पर पिक्चर करके आया है आपका। मैं गेस करता हूँ कि ये 5 एम्पियर दिया गया होगा। जस्ट गेस, जो दिया है आप वो कर लेंगे। तो क्या होगा, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्चुअली क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई रेजिस्टेंस है, इसके क्रॉस ड्रॉप हो रहा है 20 वोल्ट का और करंट जा रहा है इससे 5 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या बताओगे, 20/5 दैट इज 4 ओम। लेकिन अभी इस रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर भी कनेक्टेड है। अब आप मेरे को ये बताओ कि एक 4 ओम का मेरे पास रेजिस्टेंस है और इसके साथ मैं कोई भी दूसरे वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूँ वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस। और आपको पता है वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है, मतलब ग्रेटर देन 4 ओम होगा। वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस वेरी लार्ज। तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा बताना मेरे को। इसका इक्विवेलेंट अबाउट दिस टर्मिनल 1 इन टर्मिनल 2, what is the equivalent resistance? Will it be greater than 4 ohm, less than 4 ohm, will be between 4 ohm to 4 ohm to voltmeter resistance? कौन सा आंसर ये करेक्ट है ये बताइए। Which one? मैंने क्या कहा था कि जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो इक्विवेलेंट क्या होता है, लेसर देन द स्मॉलर रेजिस्टेंस। याद आ रहा है ये चीज, जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो लेसर देन द स्मॉलर रेजिस्टेंस। वेरी गुड मेंशन, सो इज लेस देन 4 ओम। तो ऐसा ही यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपके है, आप ये डेटा देख लेना। अगर डेटा ये मैंने सही लिखा है इस हिसाब से
स्लाइटली लेस देन 4 ओम इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये अगर वोल्ट मीटर नहीं होता, सिंपली यहाँ पर ड्रॉप हो जाता 20 वोल्ट का और करंट 5 एम्पियर होते तो रेजिस्टेंस क्या 4 ओम। लेकिन वोल्ट मीटर के खुद पे भी तो रेजिस्टेंस होते हैं, तो किसी भी रेजिस्टेंस को किसी दूसरे रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है स्मॉलर रेजिस्टेंस से भी छोटा हो जाता है। इसके बाद आपका एक डाउट और है, ये भी सॉल्व कर सकते हो आप, जैसे कि एक रेजिस्टेंस है आपके पास, फिर एक और रेजिस्टेंस है, फिर एक बैटरी है, बैटरी के पास से एक रेजिस्टेंस, फिर एक बैटरी, फिर एक रेजिस्टेंस। आई थिंक ये क्वेश्चन आपका एनटीएसए स्टेज 2 का क्वेश्चन है और आपने वही चीज कट करने के चक्कर में कहाँ का सवाल है आपने डेटा ही कट कर दिया, मुझे ध्यान नहीं है कि इस एग्जाम में ये पूछा है, लेकिन पूछा हुआ ही सवाल है ये। 3 वोल्ट and here we have resistance 2 ohm and 1 ohm again, 2 volt and one more resistance here। अब देखो लेक्चर अगर एंड हो जाएगा तो आप परेशान नहीं होना, मैं इसको डिस्कस कर दूंगा। 2 ampere and this is 1 ohm and here it is 1 ampere। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा डिस्कशन है और यहाँ से 3 एम्पियर। अब देखो होता क्या है कि इधर से 3 एम्पियर करंट आया, मैं हिंट करता हूँ, इसको ट्राई करना हो जाएंगे। 3 एम्पियर करंट इधर से आ रहा है, ये यहाँ तक 3 एम्पियर ही रहेगा और इधर से 1 एम्पियर आ रहा है, इसका मतलब इधर से कितना करंट जाएगा